So hello, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve the third problem of this FRAZ DSA sheet, and we are solving the dynamic programming level 1 linear DP. We have started with linear DP. So today we will solve this perfect square problem, and we will try to solve it quickly because I have already taught you the concept behind the dynamic programming and the how would you approach these types of problem in these previous two videos. You can watch that, and I will try to uh, give the intuition of the problem and solution little bit quickly from these next videos, and whenever there is some critical concepts I will definitely give time on that. So let's open it and try to solve. The question is, given an integer n, return the least number of perfect square number that sum to n. A perfect square is an integer that is square of an integer. So basically 1, 4, 9, 16, 25, 36. These are the perfect square, which is the square of some integer. 3 is not perfect square because it is not square of any integer. So the question is basically we have to find out the minimum number of perfect square that we can add and make the sum as given n, right? So we have to, so yeah, definitely for solving this particular problem there are different ways, and there is also mathematical way for solving this problem, that is some Lagrange's four number theorem, foursome theorem. I will add the link in the description, but I will not discuss that solution because our objective is to think about dynamic programming, how to solve the problems using dynamic programming. We are following the DP section, so we will solve every problem using dynamic programming. So let's try to discuss it on a whiteboard. So let me share my iPad screen, and we will discuss to how to approach this problem. So see. Let's say start with n equals to, let me first 100%. Yeah. Let's start with n equals to 12. So हमको 12 बनाना है. So for making 12, what are all the possible options for us? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have this much possible option. We can add some elements from this set. We cannot add 13 because 13 is more than the value of n. So we cannot add it because it exceeds the n. So we have this answer set, which will be from 1 to less than equal to n. But out of this all options, we can only take those options which are perfect square. Means you can take 1, 4, 9 only. You cannot add any other numbers. So in this case, let's try to think. How would you make sum 12? So there is one way is 1 plus 1 plus 1 plus 1. This is the first way. In this case, you need total 12 numbers. Second case, you can add 4 and plus 1 plus 1 plus 1. So 8 ones and 1 4. So total 9. You can add 2 fours, and so in this case, the total numbers are 4 to 6. You can also add 3 fours. In this case, answer is 3. What are other options? You can add 1 9, and if you add 9 you cannot add 4, because if you add 4 the sum will be 13 and it will exceed the answer. It will exceed the 12. So we have only option of adding. So in this case answer is 4, right? So
You also there is no any six ways. You cannot add two nines. It will exit the answer. So out of all this possible answer, the minimum is three. That's why the answer for this n equals to 12 is three. We can add three perfect squares to make n equals to 12. Now, now how will we solve this problem using dynamic programming? So I have already discussed in the previous videos. Whenever we are solving the programming problems, we will follow certain steps. First step is we will define our DP state. What is our DP state? Means we will use some parameter from the question to find out the answer. So as I have already discussed with you, DP of we will use DP of I. Here I, what is I denotes? So DP of I means the minimum numbers of perfect squares that make sum I. Let's say we have number I. So what are the minimum number of perfect square that are summing to make I? So this is the state of I. So we will try to solve considering this state, and if we are unable to solve the problem using this state, we will try to introduce other states, right? So always just think that whenever you have a DP problem, try to find out the states, which state you can use to find out the construct the relation. And if you are unable to construct the relation, you have to add more. But in 95 on almost every cases of the linear DP problems, you will get the solution. You will get the state as I only, right? Constant. It's not constant. It's just one dimensional, right? Now the second step is construct answers for smaller values. So in this case, what are the smaller values? Definitely 0, 1, 2, 3, 4, 5. So we will see when we are able to find out the relationship between these states. So I'll start with 0. What n equals to 0? N equals to 0 means dp of 0. dp of 0 means minimum number of perfect squares to make sum 0. Right? So हमारा n ही 0 है, तो हमें do you have any perfect square that makes sum as 0? No. So for that, dp of 0 will be 0. Now, when n equals to 1, हमको dp of 1 की वैल्यू चाहिए. हमें 1 बनाना है. 1. What are the minimum number of perfect square? You can only add 1 to make sum as 1. So in this case, dp of 1 is 1. We'll proceed slowly. n equals to 2, dp of 2. dp of 2 कैसे बनाओगे भाई? dp of 2 के लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? What are the possible things? So here you will get the relationship. So I will try to check कि अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, अगर मैं जस्ट आई विल जस्ट पिक 1, अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो मुझे और कितने की जरूरत है? Just by adding 1, you are reducing the problem. And if you realize that if you just reduce your current state as 1, you will get, you have to solve, you have to solve for 1, n equals to 1. आपने आपके पास n equals to 2 था, आपने उसमें 1 ऐड किया, तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास n1 बचा. n1 मतलब कि dp of 1. What is the answer for dp of 1?
So it will be nothing but dp of 1. समझे? फिर n इक्वल्स टू 3 पे जाओ तो और क्लियरिटी मिलेगी. सो डीपी ऑफ 3 विल बी, अगर तुमने 1 ऐड किया, अगर 3 बनाने के लिए, सम एज 3 बनाने के लिए तुमने जस्ट 1 ऐड किया, आंसर क्या आया? डीपी ऑफ 2. तो तुम्हारे पास 1 ऐड किया तो अब कितना बचा? 2 बचा. 2 बचाने के लिए, 2 बनाने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर्स अवेलेबल है. We have just defined our state as the minimum number of perfect square to make sum as I. So you have already that I, that remaining I, and you are just adding 1. So you have that. So you have answer for the that state. Just little bit. You are just thinking why you are just adding 1. There are multiple possibilities. Yeah, we'll get it. We'll see it. N is equals to 4. For n equals to 4, what is what are the things? Just add 1. 1 ऐड करोगे, dp of 3. But one more thing, 4 is also a perfect square. You can just add 4. You can just add 4. अगर तुम just 4 ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास कितना बचा? dp of 0 which is 0. तो इस केस में तुम्हारे पास आंसर, अगर ये वाला केस कंसीडर करते हो तो 1 प्लस डीपी ऑफ 3. डीपी ऑफ 3 हमारा क्या था? 1 प्लस डीपी ऑफ 2. डीपी ऑफ 2 क्या था? 1 प्लस डीपी ऑफ 1 मीन्स डीपी ऑफ 2 हमारा था 2. डीपी ऑफ 3 हमारा था 3. डीपी ऑफ 4 क्या होगा? डीपी ऑफ 4. तो अगर तुम ये करते 1 प्लस डीपी ऑफ 3 तो इन दिस केस आंसर इज 4. बट इफ यू जस्ट टेक 4 प्लस डीपी ऑफ 0 मीन्स तुम्हारे पास, तुमने एक एलिमेंट ऐड किया, जस्ट एक एलिमेंट ऐड किया, आंसर इज 1. तो भाई 4 और 1 में से मिनिमम कौन है? 1 है ना. तो तुम स्टोर कर दोगे 1. समझे? नाउ एक और देखते हैं, n इक्वल्स टू 5 देखते हैं, फिर समझ आ जाएगा. n इक्वल्स टू 5 विल ट्राई आउट अगेन. आई विल जस्ट ऐड 1. 1 ऐड किया तो मेरे पास आया, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा डीपी ऑफ 4. रिमेनिंग 4 बचा, बट उस 4 का जो आंसर है हमारे डीपी ऑफ 4 में स्टोर्ड है. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. गॉट इट? But also you can add 4 also, because you can try out all possible perfect square. So यहाँ दिखा, यहाँ फंडा दिखा कि तुम्हें सारे पॉसिबल स्क्वायर्स पे, परफेक्ट स्क्वायर्स पे ट्राई आउट करना है कि तुम अगर उन परफेक्ट स्क्वायर्स को ऐड करते हो मीन्स यू आर जस्ट डूइंग, जस्ट फाइंडिंग आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज. अगर तुम उसको ऐड करते हो तो तुम्हारे पास डीपी ऑफ 1 बचा, और डीपी ऑफ 1 का भी आंसर हमारे पास पहले से है. तो भाई क्या 9 ट्राई कर सकते हो? इसमें 9 ट्राई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना. तो इस केस में हमारा, क्योंकि 9 ऐड करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो नहीं कर सकते. सो पहले वाले में जो क्या हुआ, पहले वाले में इन दोनों का जो मिनिमम रहेगा वो हम स्टोर कर देंगे. समझे? तो देखो क्या हो रहा है. अब जस्ट एक फंडामेंटल समझो जनरल आई के लिए. अगर तुम्हें एक डीपी ऑफ जनरल आई कंप्यूट करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे तो देखो, तुम सारे परफेक्ट स्क्वायर्स पे ट्राई करो, सारे परफेक्ट स्क्वायर पे ट्राई करो. पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1. तुम 1 ऐड किए तो 1, और अब तुम्हारे पास कितना रिमेनिंग बचा? आई में से 1. डीपी ऑफ आई माइनस 1. ठीक है. तुम 2 ट्राई किए. 2 you cannot try 2 because you have to just use perfect square, so you will try 4. If you try 4, dp of I minus 4. 9, dp of I minus 9. 16, dp of I minus 16. Similarly, j square plus dp of I minus j square. और इन सारे की जो मिनिमम वैल्यू होगी, आप इन ओवरऑल जितनी भी पॉसिबिलिटी है
You have to take the minimum of all. बट एक और चीज, ये जो जे है, हियर आई एम जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल रहा हूँ, उसकी भी एक लिमिट है, वो कब तक चलेगी? Till what number you can just subtract this value? कब तक तुम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तब तक कर सकते हो जब तक तुम्हारा जो जे स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल्स टू आई होगा. दिस इज द कंडीशन. तो तुमको फॉर एवरी आई यू हैव टू गो थ्रू ऑल पॉसिबल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स, एंड यू हैव टू चेक ऑल पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, सारे परफेक्ट स्क्वायर जो कि लेस, जिनका स्क्वायर जो स्क्वायर आई से छोटे हैं, because you cannot subtract more than I from the J. There is no any states like dp of -10, और उसका कोई मतलब भी नहीं है वैसे स्टोर करने का. So this is the solution for our this current problem. And अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कस करो, इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट? एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, मतलब कि तुम सारे i के लिए ट्राई कर रहे हो, i इज द नंबर, इज n, तुम i तक ट्राई करोगे क्योंकि 10⁴ तक है, तो तुम ट्राई कर सकते हो, तुम सारे i तक ट्राई करोगे. फॉर एवरी i यू विल अगेन ट्राई फॉर ऑल पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, तो अभी कोड से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. सो दिस इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंट्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लेट्स ट्राई टू डायरेक्टली कोड. सो क्या करेंगे, हम अपना पहले की तरह अपना डीपी स्टेट बनाएंगे, n+1 का बना लेते हैं फॉर जस्ट सेफ्टी, एंड वी विल डिफाइन दिस स्टेट एज मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट is requires to make sum as I. डीपी, इसको थोड़ा अच्छे से डीपी ऑफ आई डिनोट्स. ठीक है, हमने डिस्कस किया कि क्या होगा अगर हमारे पास अगर जीरो की वैल्यू निकालनी हो. डीपी ऑफ जीरो विल बी जीरो, डीपी ऑफ वन विल बी, एक ही ऐड करेंगे. डीपी ऑफ टू कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 से आई लेस देन इक्वल्स टू आई तक, एन तक लूप चलाएंगे, सारे पॉसिबल आई के लिए चेक करेंगे. और इधर क्या करने वाले हैं हम, इधर हम करने वाले हैं, मेम सेट कर देते हैं, मेम सेट dp 0x3f. एंड सो बेसिकली cp DSA के टर्म्स में दिस रिप्रेजेंट्स दी इंफिनिटी. सो मेम सेट में हम ये बाइट वाइज एक्सेस करते हैं, तो यू कैन नॉट गिव some 4-bit numbers on other numbers. So it will only take zeros or -1, something like that. So size of dp, क्योंकि हमको मिनिमाइज करना है इसलिए हम एक मैक्सिमम नंबर डाल दिए अपने सारे dp की वैल्यूज में. नाउ आई विल ट्राई टू आइटरेट ओवर ऑल int j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड j क्रॉस j लेस देन इक्वल्स टू i तक जाएंगे, और j प्लस प्लस. और व्हाट आई विल डू, dp ऑफ i विल बी minimum of dp of I and dp of I minus j plus 1, and we will just return dp of n, because हमें n का आंसर चाहिए. dp of n का आंसर, what is the cost to make minimum number of perfect squares to make sum as n. Let's try to run it, and yeah, it is giving correct answer. Let's try to submit it, whether it is passed or not. So yeah, it is accepted. So thank you so much for this video, and we'll see you all in the next video. I will see you all in the next video. Thank you so much.